The first question that we have in this paper is very basic. We बल्कि उन्होंने शायद इस पहला क्वेश्चन इतना इजी इसलिए दिया ताकि स्टूडेंट कंफर्टेबल हो जाए। उन्होंने सबसे पहले हमें बेस पांच क्वांटिटीज पूछी हुई है। We know that के बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? How many base quantities do we have? 7 बेस क्वांटिटीज है 7 and all 7 बेस क्वांटिटीज आर स्केलर इन नेचर, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स भी हैं। अब उन्होंने क्वांटिटीज पूछा, वी नो दैट कि बेस क्वांटिटी करंट इज बेस क्वांटिटी एंड मास इज करंट बेस और क्वांटिटी, बाकी रेस्ट ऑफ मास। वो हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी? व्हिच डेफिनेशन डज नॉट, हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। एंड ऑल्सो बेस क्वांटिटीज को एक और भी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन तो नहीं, मतलब डेफिनेशन इसकी एक और भी है, क्वांटिटीज विच कुड बी डायरेक्टली मेजर्ड। पता है ना? ओके। हाँ जी हाँ जी। जैसे मास को डायरेक्ट बैलेंस से मेजर कर लिया, टाइम को डायरेक्ट स्टॉप वॉच से मेजर कर लिया। ये वैसे फोर्स को भी तो न्यूटन मीटर से मेजर कर सकते हैं। वो कैलिब्रेटेड होता है ना, ओके ओके। कैलिब्रेशन की होती है ना, अप टू वेट के हाँ अकॉर्डिंगली, जी वेट से मल्टीप्लाई करके। देखो, डायरेक्ट मेजरमेंट से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि मास को मेजर करने के लिए हमें किसी और मीटर पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फोर्स है, ओके। तो फॉर दैट वी नीड mass and acceleration. For energy, we need either 1/2 mv square or mgh or fd or anything, ठीक है। So let's, हाँ अच्छा जी हाँ अब है जी। पावर। अच्छा, उन्होंने बेस यूनिट भी काफी वर्क आसान डन दिया हुआ ओवर है। टाइम लगा के हाँ, सिंपली एफ वर्क इंटू डन, डी पावर ओवर। इज इक्वल्स टू हाँ, वर्क डन ओवर टाइम, विच अच्छा 2 मार्क्स में एफ तो हमें इंटू डी ज्यादा ले ओवर जाने की नहीं है। तो किलोग्राम मीटर मीटर पर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर इनटू स्क्वायर मीटर्स इनटू 1/2 ओवर सेकेंड सेकेंड क्यूब बन जाएगा। सो किलोग्राम मीटर टू सेकेंड क्यूब। मीटर पर क्यूब। देन पावर कैलकुलेट करने को बोलिए, उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है, उन्होंने हमें पावर वॉट्स पर मीटर स्क्वायर दी गई, उन्होंने इसमें इंटेंसिटी ओवर एरिया वाला फॉर्मूला पावर लगेगा। पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया उसने दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब यूनिट्स को देखो, यूनिट्स को हमने कंपेयर करना है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो पावर ओवर एरिया इनटू एरिया करोगे तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल हैव आवर पावर, कैंसल आउट। ठीक है। ये 3 नंबर का नहीं तो हो सकता फिर। सो 950, नहीं नहीं, 3 नंबर के हैं, 950 इंटू 2.2। चूंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हमें उसकी पावर लिखनी होगी 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -4 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। एंड वैसे भी हमारे पास इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, पावर पर यूनिट एरिया। ये तो पावर ओवर एरिया। फॉर्मूला की बेसिस पे बता रहा हूँ, बट मैंने ये वाला सेक्शन सिर्फ इसलिए कराया है कि इन केस समवन गॉट कंफ्यूज के भी हमने इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने जो लेवल्स में बताया हुआ था, ऑलवेज गो फॉर द यूनिट्स की, यूनिट्स क्या बनना है। हाँ जी हाँ जी। जैसे केमिस्ट्री के मोल्स ये भी वगैरह यूनिट करते हैं से। हम लोग, इन दोनों को ये भी मल्टीप्लाई यूनिट करो, क्या से। बन रहा है? इसका आंसर आ रहा है 0.209। 209 तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल 0.21। 0.21। ये 3 नंबर का कैसे हो सकता है? इसमें तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। हाँ नू की यार पक्का इसका यही आंसर है? मैं मुझे ना इस तरह क्वेश्चन देख के वैसी टेंशन शुरू होती है, ये आंसर है, इतना नहीं आसान पक्का कैसे ये, हो सकता है? मतलब आई डोंट हैव द मार्किंग स्कीम्स, बट वो सॉल्व पेपर है, बट वो भी मतलब उसको मैंने अभी खोला नहीं है, बट यस यही होगा। हाँ मतलब इतना तो भरोसा रखो बहन मेरे को। यार नहीं, आपका नहीं, मैं खुद वहां बैठ के परेशान हो रही थी, नहीं यार हो नहीं नहीं, सकता, कुछ और करके देखती हूँ। अब एक्सेलरेशन उन्होंने पूछा हुआ, एक्सेलरेशन 1 मार्क्स का ही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
देन हमारे पास इन्होंने स्पीड कैलकुलेट करने को बोली हुई है डाइवर्ट की. वी हैव 3 पॉइंट्स, वी हैव एंगल्स, वी हैव हॉरिजॉन्टल, वी हैव speed, vertical, air resistance is negligible, theta angle, height 1.2 and हमें speed calculate करनी है. ये तो हमें पता है कि उसका vertical component जो होगा वो throughout क्या रहेगा, constant. Sorry, horizontal कांस्टेंट. component of velocity will always be constant. And जो air resistance जीरो है तो gravity भी क्या होगी हमारे पास, वो भी क्या होगी, मतलब constant ही होगी हमारे पास. तो अब 9.81. हमें hits the water surface उन्होंने हमें बोला हुआ है. तो water surface and 1.2. yes, हमारे पास जो डिस्टेंस है, एक सेकंड होल्ड करना. अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर लेंगे. तो हमारे पास हाइट बन रही है 9 - 1.2, सो दैट वुड गिव अस 7.8 meters. एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमारे पास v cos of थीटा होता है. और जो हॉरिजॉन्टल होता है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल इज v cos of थीटा एंड वर्टिकल जो होता है हमारे पास वो भी sin of थीटा. अब हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5.9. हाँ जी, 5.9 इंटू cos 60. cos 60. इसका आंसर है 2.95. वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, 5.9 into sin of 60. 5.11. 5.1 कैन. मुझे याद आया कि, हाँ जी. अच्छा जी, हाँ, अब आमीन. हमें जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. वेलोसिटी इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. अगर डाउनवर्ड आ रहे होते तो 2 -2gs लिख देते. ये वाला सेक्शन से पता है ना आपको. हाँ जी, हाँ जी. चूंकि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल तो ए जी के इक्वल होगा, और चूंकि हम लोग डाउनवर्ड आ रहे हैं तो पॉजिटिव जी होगा. लेकिन अगर इनकेस हम लोग अपवर्ड जा रहे होते तो ए किसके इक्वल होना था, माइनस माइनस. जी के इक्वल होना था. माइनस. अब v की वैल्यू हमारे पास इज टू बी फाउंड आउट, और u की वैल्यूज हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 5.9 थी. 5.9. सॉरी, वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वर्टिकल हमारे पास 2.9 5.1 है. थी. 5.1, सॉरी सॉरी, 5.1 5.1. वो ओके ओके. हॉरिजॉन्टल थी. 5.1 का स्क्वायर प्लस 2 into g which is 9.8 into s which is 7.8 का होल अंडर. इसका आंसर है 13.4. अब ये हमारे पास, अच्छा, हमने दो दफा वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ इसलिए फाइंड आउट किए कि दैट वाज द इनिशियल एंड दैट वाज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस ऑफ वाटर. अब ओके. हम लोग वही रूल लगा देंगे जो हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कि वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2.9 का स्क्वायर प्लस 2.9 13.4 का और वी स्क्वायर. वाई. This would be our final velocity which would be equals to max. क्योंकि हमने vx की वैल्यू को वही रखा क्योंकि vx is constant throughout. ठीक है, vy की वैल्यूज जो है वो हाँ जी, चेंज हाँ होती जी. है. तो हमने उनकी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज को कैलकुलेट किया. इनिशियल वैल्यू के को यूज करते हुए हमने vy की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट की. तो इनिशियल वैल्यू वाज 5.1. मैं लिख भी देता हूँ so that you could use it for later value. Initial value along
y-axis, and this is the final weight. यार देखिए अब ये बनता है ना 3 मार्क का क्वेश्चन, वो पिछला वाला तो अजीब 1 नंबर का सही होता। वो tricky question था ना, that's why they were giving you that marks. What is the answer we're getting of this under root section? 13.7. 13.7 meters per second. That is our final answer. Moving on to the next one. The divergent B enters the water and decelerates. Describe and explain the variation of viscous drag force acting on the driver in the water as he moves downwards. So ठीक है, अब जैसे जैसे वो downwards जाता रहेगा, so obviously उसने deceleration already बोल दी है, which means कि viscous drag की value क्या होगी, increase होगी. यहाँ पे mostly ना students mistake करते हैं viscous drag force और drag force, whatever you want to say. ये है फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक हो गया. इसको नॉर्मली स्टूडेंट्स मिक्सअप कर देते हैं विद द रिएक्शन फोर्स जो कि अपथर्स्ट होती है. इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना. अपथर्स्ट इज समथिंग दैट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट, दैट्स ऑलवेज देयर. विस्कस ड्रैग सिर्फ तब एक्ट करेगा ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ अ मोशन इन दैट ऑब्जेक्ट. So as they already have mentioned, the object is लेकिन विस्कस भी तो decelerating. अपवर्ड, विस्कस भी नहीं, ऐसे विस्कस ड्रैग की विस्कस पोजीशन, जो फोर्स होती है वो हमारे पास मूवमेंट के लाइक ऑपोजिट में मूव करती है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. यस, अपथर्स्ट हमेशा अपवर्ड हाँ होगी. वैसे ठीक है, बट विस्कस ड्रैग की अब पोजीशन तक हमेशा डिसाइड होगी अपवर्ड ऑन द होती है। हाँ जी, बेसिस ऑफ व्हाट के वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो मूवमेंट। हमारे पास ये क्या है, एज द ऑब्जेक्ट decelerates, so does the speed decreases. As going downward, frictional force increases, resulting in decrease in speed. ये दो दफा नहीं लिखते. As the object as going downward, frictional force increases, resulting in decrease in speed. सही है, वो तो मैं अपने वर्ड से सही करके So लिखूंगी। does the speed. So does the speed. अब उन्होंने हमें प्रूफ करने को बोला, ये मुझे आसान लगते हैं जिनमें हमें पता होता है कि क्या आंसर आना है. आंसर है 740 ना, उन्होंने आपको बताया हुआ तसल्ली है होती है कि आपका आंसर आ रहा है। हाँ कि ये आंसर आ रहा है. अब उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है एंड डेंसिटी दी हुई है. वी नीड टू कैलकुलेट द अपथर्स्ट फोर्स. ठीक है, हमें पता है अपथर्स्ट किसकी इक्वल होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की इक्वल होता है. रो जी वी। एंड अपथर्स्ट का अपना फॉर्मूला भी क्या होता है, रो जी वी. रो की वैल्यू इज 1 into 10⁻³ G is 9.8 and V is 7.5 into 10⁻². इसका आंसर है 735.75। 735. 735, हाँ जी। जिसको हम राउंड ऑफ करके 740. 740 लिख देंगे यार, कब राउंड हाँ, ऑफ करके 3 लिखना 5 होता है है, ना हर वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखते ये. हैं हाँ, या? देखो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर था ना, तो हम उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखते हैं. नहीं वो देखिए, इसमें तो मैं चलो पता था कि हमने 1 to 740 2 तक आंसर लिखना है, सिग्निफिकेंट, हाँ लेकिन फॉर 1 to एग्जाम्पल 2 अब जैसे हमारे सिग्निफिकेंट पास फिगर्स तक पिछली नॉर्मली वेलोसिटी लिखते हैं. निकल। 1 to 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. एंड इन केस अगर हमने वैसे डिसाइड करना ओके हो ओके तो हम कैलकुलेशंस के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज को देखते हैं कि उसके अंदर किसके पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली. ओके ओके। अच्छा जी, अब हमने इसमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. वी हैव मास, we have viscous drag, we have upthrust, we can find out the weight, and do we have any other force present? We have नहीं नहीं। speed, I have seen it.
है रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल होती है, एम ए के, और ये किसकी इक्वल होगा, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है माइनस टेंशन, टेंशन की जगह पे हमारे पास कौन सी दो फोर्सेस एक्ट करनी है, अपथर्स्ट एंड अपथ्रस्ट और हमारे पास ड्रैग है फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है। वेट माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, वेट 78 इंटू 9.8 हो जाएगा, माइनस अपथर्स्ट कितना था 740, एंड 740 ड्रैग फोर्स कितनी प्लस थी हमारे पास 950, ऊपर, 950 दी प्लस हुई है। 950 divided by mass is equals to acceleration. इसका आंसर है -11.86। अच्छा ये तो पता नहीं कि मैंने वेट को क्यों माइनस किया। हाँ जी हाँ जी, कुछ वेट डाउनवर्ड से बाकी दोनों अपवर्ड्स हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएंगी। एंड वैसे भी हमारी रिजल्टेंट मोशन भी तो डाउनवर्ड ही हो रही थी ना, सो दैट हाँ आल्सो जी हाँ एड्स जी, टू अस। हाँ व्हाट माइनस व्हाट 11.86। तो हम यहाँ पे जस्ट 11.86, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन 11.9 भी लिख सकते हैं, और डायरेक्शन क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड्स होगी। माइनस माइनस में वैल्यू आ रही है विच मींस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो अपवर्ड्स जाएगा। ओह, अगर तो माइनस में तो माइनस का अपवर्ड्स साइन है आ और रहा है अगर ना, पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड्स। हाँ तो इन द सेम डायरेक्शन, और माइनस का मतलब क्योंकि ओह, वेक्टर क्वांटिटी तो -11.6 इज इंडिकेटिंग दैट इट इज इन द एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड्स है। मोशन, ओके। ठीक है। सो moving on to question number 3. Thin metal wire X has a diameter of 1.2 in 10⁻³ used to suspend a model planet as shown in the figure. We have a graph of stress strain. We can get the Young's modulus from here. Initially, they have said the strain in X is 5.4 in 10⁻³. Use figure 3.2 calculate the force. So force is equals to stress is equals to force per unit area. First, we'll calculate the area using the diameter that has given in the question. So here we know that it's equals to pi r square. Let me neatly write it. Pi r square, which would be equals to pi d by 2 square. So we'll get this value from here, which will be equals to 1.1 10⁻⁻6 meters. And 5.4 into 10⁻⁻63 gives a value of 0.72 gigapascal. So putting this value in the question, we'll get a value of 814 into 814.3 newtons. Moving on to the next part, they have asked us to find out the original length. In order to reach to the original length, we'll use the formula of Young's modulus and elastic potential energy to find out the extension, and then put it in the equation to find out the original length. We know the strain is equal to change in length over original length. So using the formula of elastic potential energy, first we'll find out the extension 1 by 2 fx. We have all the data given in the question, 0.31 joules, so 2 into 0.31. F we recently found it, which 814.3, giving us a value of 7.6 and 10⁻⁻4. Putting this in the equation of strain, and we had the value of strain previously, which was 5.4 into 10⁻⁻3. So rearranging the equation to find out the original length, we got a value of 0.14 meters. In the last part, they have asked us to find out wire X is replaced by a new wire with the same original length and diameter, but doubles the Young's modulus. We know that Young's modulus has a relation of stress over strain. So if we would increase the Young's modulus by a factor of 2, the
will strain and Young's model has an inverse relationship. Stress and strain has a direct relationship. So we will get a more steeper graph than that of before that I mentioned. So I've drawn the graph. It's not neat, but with scale, try to make them as accurate as possible. So the graph with respect to this one will get this value stress over strain. Uh, the next question is easy. Question number 4, and that in the very first they have asked and sorry told us that we have to complete the equation and the alpha particle is emitted. We know that when alpha particle is emitted, the mass reduces by 4 and charge decreases by 2. So here we'll get 211 and here we'll get 82. State principle of conservation of momentum. What is principle of conservation? That in an isolated system, the initial momentum is equals to 5. So, or we have other definition as well. When it comes to principle of conservation of momentum, it would take into account the collisions. So the momentum of a body before collision is equal to momentum of a body after collision. So this could also be written. So let me write it out. Momentum of a system before collision is equals to momentum after collision. And the equation was m1v1 plus m2v2 is equals to m1v1 dash plus m2v2 dash. We have studied that in O levels as well. Isolated system का meaning है दोबारा repeat कर दूं. Isolated system is a closed system where no external force acts. Acts on the body. Next part was calculate the speed of the particle. Has a speed, the particle P has a speed of different after the decay nucleus X is stationary. It is a particle after the decay. So again, the formula that I've written below, will make use of it. MPVP is equals to MQ. There is only before decay is only MP is equals to MPVP dash plus MQ VQ dash, or just simple. So mass is 215 times 3.2 into 10 raised to power 5 is equals to mass is again mass would be this thing. Q after there would be only Q, not P. Yeah. So NQ VQ is equals to Q has a mass of 211, P has a mass of 215. So 211 times 0, as they have written, it becomes stationary. What is the second particle? Plus 4 into speed. All of the values would be in unified system, so that unit would be cancelled out, so we do not need to write the u's alongside with it. So 215
times 3.2 into 10 to the power 15 divided by 4. This would give us a value of 1.72 into 10 to the power 7 meters per second. Then we have, with reference to the propagation of energy state, what is meant by transfer field. And then with reference to the energy bola, reference to the energy terms. So what will write by K type of wave in which particle motion is perpendicular to the propagation of wave. We have studied that in O levels that transverse wave, the particle moves up and down and wave goes in the forward direction. It has an angle of 9. A space telescope is designed to prime electromagnetic radiation with wavelength in the range of 12 micrometer to 28 micrometer. State the region of electromagnetic spectrum for this radiation. So with these values, this fall under the infrared radiation. Let me show you why I'm considering it to be. वैसे तो A levels के अंदर we have the diagram. Let me show you कि वो wavelength fall किसने कर रही है. It's loading. Hold on. 12 micrometer to 28 micrometer monopolar. So we have to look for the values for this problem. Wavelengths are in if one could see from here. Okay. Infrared region की wavelengths हमारे पास कहाँ पे आ रही नहीं it is the usual. Okay. I look for the wavelength. Yeah. So visible region ये 10 is for -6 to 10 is for -4 meters की रेंज के अंदर जो है वो फॉल करती है उसमें 12 micrometer to 28 micrometer बोला हुआ है. So this value would be in between. That is the range for microwave infrared radiation. So we'll go with that option. Then we have, what do we have? The next question. We need to find the wavelength. Okay. Time-based setting on the oscilloscope is 5 seconds per centimeter. So from one wave to another wave, let's say count the number of boxes. How many do we have here? Starting with let's start from here 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So 6 centimeter, 5 into 10 to the power of -15 seconds per centimeter into 6 centimeter. Cancel out the units and multiplication would give us a value of 30 into 10 raised to the power -15. So that is the speed, time. V equals to
f lambda or v equals to lambda by t. In either case, we can use the values. Since it's not a time period, 1 over 330 into this. So the choice is yours. You can go with either of the formula. Wavelength इसने हमें दी हुई थी, sorry, हमें calculate करना है. So wavelength would be equals to speed into time, and this would be equals to time is. Let me go with this one. Let's not mix it up. So we will get confused here. 30 into 10 is power minus 15 would be equals to 3.3 into 10 is power 13 hertz. So lambda is equals to V over F. V is 3 into 10 is power 8 because electromagnetic radiation and frequency came out to be 3.33 into 10 is power 13. Putting this will get 9.01 into 10 raised to power minus 6, rounded off to 9 into 10 raised to power minus 6, 9.0 I mean. We have a double slit experiment. There are 7 bright fringes explain how the pattern of bright and dark fringes is formed. क्यों formed होता है pattern of the interference fringes due to the. Why do we get interference fringe? Due to interference of light after diffracting from the slit, they interfere constructively or destructively, giving bright and dark fringes. The condition we लिख देते हैं उसमें. Try to complete your answer within the given lines. The condition for interference. क्या होती है interference की conditions? That light must be coherent and should be in phase. Light should be coherent, in phase, and one comma. कोहेरेंस का मीनिंग आप लोगों को पता है कि क्या होता है. कोहेरेंस का मीनिंग क्या होता है? Waves from the same source. From same source. Then they've asked us to find out the wavelength. They have given us the slit spacing that's between the center of the bright front X and Y. Okay, X to Y. We need to count the number of fringes. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. ठीक हो गया. Okay. Distance is this 10.22. Obviously, हम सबसे पहले उसको 6 से divide करेंगे to get the fringe spacing. So let's divide the value with
10.22 divided by 6 is giving us 1.7 millimeter. Formula: x is equals to lambda d over a. Lambda is to be found out, so x a over d. X is given as 1.2 millimeter. X into 10 raised to the power minus 3 times spacing, which was this a, times 1.7 into 10 raised to the power minus 3 divided by distance between the slit is 3.1. 3.1. It's already in meters, so we do not need to write anything across it. So the wavelength is coming out to be 6.58 into 10 to the power minus 7. The light is replaced by different visible light with shorter wavelengths. जब shorter wavelength होगी, state how the fringe spacing, जब shorter wavelength होती है, it would decrease. The separation would decrease. That we have done multiple times. Then P, Q, and R are points on the string on figure. Draw crosses to show the position of nodes. तो nodes हमेशा equilibrium points पे होते हैं. हम क्रॉस बना देंगे यहाँ पे and यहाँ पे. Okay. Then we have state the difference between P and Q. So they are approximately in phase with each other. Both are at the same positions approximately. Whereas P and R are opposite to each other, so 180 होगा हमारे. Physically P and R are 180. These are approximately on the same phase of vibrations, so 0. Then they have asked us the electrical potential difference. How do we define electrical potential difference? O levels, work done per unit. One marks, otherwise we would have written as work done per unit charge as well for 2 marks obviously. Internal resistance हमें find out करनी है. E is equals to कौन सा formula यूज हो जाएगा? E is equals to IR plus IR. I common आ जाएगा. R plus R. This R is given as 6 ohms and current is given as 0.25 and this is R. Let's replace it. Let me take it to this part. So 1.8 divided by 0.25 minus R, which is 6 ohms, would give us a value of 1.2. In the next part, state whether the EMF of the cell after T1 is greater than or less than or same as it was before T. At T1, switch S in figure 7.1 is closed. Show the variation of time reading on them to state whether the EMF he is asking. So we could see here they are connected in parallel, so the EMF would not change across it. And similarly, also battery, it's the energy that is given to go through the whole circuit, so that would not change. By considering the effect of the lamp on the total resistance of the circuit, explain the variation of emitted reading shown in figure 7.2. So we could see that emitter value is decreasing non-uniformly. दोनों यूज कर रहे हैं, so current जो है उसमें change. As both resistor and the lamp is connected in parallel, so the total resistance, the RT, would decrease
So current would increase. But we have, due to filament bulb, energy would be dissipated in form of heat. So increase in temperature reduces current due to increase in resistance. We know that R and I has inverse relationship, but R and T has direct relationship. Since T is increasing, so would R. So if R is increasing, so the current would decrease in this particular case. Moving on to the next one, very easy question. And leading to the last question, state the class of groups. Name of the class of fundamental particles that contains neutrinos. कौन से होते हैं उन्हें हमें क्या कहते हैं? Leptons. Easy. Identify a possible flavor of this quark. Okay. A hadron has a charge of positive one where E is elementary charge. The hadron P is composed of down antiquark and only one other quark. Identify. So 1 by 2 plus 1 by 2 would be plus में ही आएगा तो up quark आएगा हमारे पास. Down के against up. 3 by 2 plus 1 by 2 would give us, I guess, 1 by 2, if I'm not wrong. No, it would give us 2 by 2, which would be equals to E. Yeah. And type of hadron in P, that would be mesons, whatever you pronounce it. A nucleus undergoes radiative decay to form nucleus are emitting an antineutrino and other particle X, as shown in the decay equation. Which particle is represented by X? Q radiatively to form nucleus R, emitting an antineutrino, and another particle, beta particle, that would be beta particle. Because we know that how would we know कि एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास किसके साथ निकलता है? वो बीटा डिकेज के साथ हमारे पास न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज वहां से डिके होता है. सो वी नो इट मस्ट बी अ बीटा पार्टिकल. ये उसने हमें हिंट दे दिया था कौन सा. अब बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव का पूछता तो हम रिस्पेक्टिवली बता देते, बट उसने वो नहीं कुछ पूछा. कंपेयर द न्यूक्लियन नंबर ऑफ Q and R. Since a beta particle is emitted, so nucleon number would be same. And compare the charge. So Q R would have one charge, one more proton, so greater charge over. So R would have one proton greater than Q. So that is the end of 2024 paper. I hope you understand most of the questions. Still anything left that you don't, feel free to comment and